हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे प्यारे से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखना है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आएंगे, यानी कि जब आप एक्सरसाइज पे आओगे तो आपका सबसे पहले मिलेगा आपको एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल्स यूजेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू सेंड सिग्नल्स विया न्यूरॉन्स, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स रिसीव्स इम्पल्सेस। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, डेंड्रॉन, राइट है। दूसरा है, ब्लैंक इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ऑप्शन लिखेंगे थर्ड, एसिटिल क्लोइन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, द सपोर्टिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस माइलिन शीट इन द पीएनएस आर, ऑप्शन डी, राइट है। फोर्थ है, अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज लोकेटेड आउटसाइड द सीएनएस इज कॉल्ड, ऑप्शन डी, गैंग्लियन। पांचवा है, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर लोकेटेड, तो आपका ऑप्शन आएगा सेकेंड, ऑन सेल सरफेस। ओके, छठा है, इफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स ऑफ अ मैन आर रिमूव्ड द स्पेसिफिक रिजल्ट विल बी, तो ऑप्शन बी जो है डिस्टर्बेंस ऑफ Ca++, ये राइट है। सातवां है, हार्मोन थायरोक्साइन, एंड्रोलाइन एंड नॉर एंड्रोलाइन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, टायरोसाइन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, pheromones are chemical messengers produced by animal and released outside the body. The order of these substance effect, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बिहेवियर, राइट है। नौवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिसेक्रेट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, राइट है। 10वां है, आफ्टर ओव्यूलेशन गैराफाइन फॉलिकल चेंज इनटू, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कॉर्पस लूटियम, ये राइट है। 11वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ हार्मोन विच अ डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड, ये राइट है। 12वां है, ब्लैंक इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ब्रेन, तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, पियामेटर, ये राइट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले दिया गया है आपको, यानी वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड न्यूक्लियस, तो आंसर लिखेंगे, नियर द सेंटर ऑफ द मिड ब्रेन इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर scattered within the white matter. It is called the red nucleus. It plays an important role in controlling posture and muscle tone, modifying some motor activities and motor coordination. Second, what is the importance of corpora quadrigemina? आंसर लिखेंगे, द corpora quadrigemina are four rounded elevation on the dorsal surface of the midbrain. The two superior colli are involved in visual reflexes and the two inferior colli are relay centers for auditory reflexes that operate when it is necessary to move the head to hear sound more distinctly. Third है, what does the cerebellum of brain control? So आंसर लिखेंगे cerebellum. It is the second largest part of the brain and consists of two lateral hemispheres and the central worms. It is composed of white matter with other layer of gray matter, the cortex. While the white matter intermixes with the gray matter and show a tree-like pattern called arboreate. The surface of the cerebellum shows convolution. A number of nuclei lie deep within each lateral or cerebellar hemisphere. Over 30 million neurons lie in the cortex. Three pairs of myelinated nerves bundles called cerebellar peduncles to connect the cerebellum to the other part of the CNS. CNS में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फंक्शन क्या है सेरेबेलम का, वो बताया गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर दैट मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पोस्चर, बैलेंसिंग ओरिएंटेशन, moderation of voluntary movement, maintenance of the muscle tone. It is a regulatory center for neuromuscular activities and controls rapid activities like walking, running, speaking, etc. All activities of the cerebellum are involuntary. ओके, तो ये हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द 3 ईयर ऑसिकल्स। आंसर लिखेंगे फोर्थ का, middle ear. It is consist of a chain of 3 ear ossicles called malleus, means hammer, indicates any anvil, and steps in strip is the smallest bone. On receiving the vibration from the tympanic membrane, the ear ossicles amplify the vibration and transfer these to cochlea. A short eustachian tube connect the middle ear to the pharynx. It equalizes air pressure on both sides of the eardrum. नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गन विच एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे आप प्रोजेस्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। ओके, तो ये छठा है, उसका आंसर हम लोग लिखेंगे प्लासेंटा। डन। उसके बाद यहाँ पे पांचवा हमारा रह गया था कि नेम द एंटी एब्यूशन हार्मोन। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रोजेस्ट्रॉन, PROGESTRON, प्रोजेस्ट्रॉन, और इसका लिख देंगे प्लासेंटा। ओके, और सातवां है हमारा, नेम द टाइप ऑफ हार्मोन विच बाइंड टू द DNA एंड अल्टर द जीन एक्सप्रेशन। तो इसका आंसर लिख देंगे स्टीरियोइड्स, STEROIDS, ठीक है। स्पेलिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि स्पेलिंग तो बताया नहीं, ऐसे, ठीक है, तो इसलिए बता दी। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड ऑफ लोअर जॉ। आंसर लिखेंगे excessive secretion of growth hormone causes abnormal elongation of long bones of arms and legs and of the lower jaw. नौवा है, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पेनल ग्लैंड। ओके, तो नौवा का आंसर हम लोग लिखेंगे मेलाटोनिन, ठीक है, MELATONIN, ठीक है। और 10वां है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग इम्यूनिटी। तो आंसर लिखेंगे थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑर्गेनिज्म विद द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इन देम। तो यानी हमें ऑर्गेनिजम्स दिया गया और उसका नर्वस सिस्टम क्या है वो हमें मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले है न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का हम लोग लगाएंगे D, ह्यूमन। ओके, सेकेंड है लैडर टाइप। तो लैडर टाइप होता है फ्लैटवर्म का। गैंग्लियन का आएगा अर्थवर्म, और नर्व नेट का आएगा हाइड्रा। देखो यहाँ पे आंसर शीट भी दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज कर करके लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला है, डिस्क्राइब द एंडोक्राइन रोल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आंसर लिखेंगे, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। दे आर 4 टाइप ऑफ सेल इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच हैव एंडोक्राइन रोल इज दैट दे सेक्रेट्स हार्मोन्स। First है alpha cells. They constitute 20% of isolates of Langerhans. They secrete hormones glucagon. Glucagon stimulates glycogenolysis, means the breakdown of glycogen in the liver, which causes hyperglycemia. Next है beta cells. They constitute 70% of isolates of Langerhans. They secrete insulin, which stimulates glycogenesis, formation of glycogen in the liver and muscles. Insulin causes hypoglycemia by increasing the uptake of glucose by cells. Delta cells. They constitute 10% of isolates of Langerhans. These cells secrete somatostatin, which inhibits the secretion of insulin and glucagon. It also lowers gastric secretion, motility, and absorption in the digestive tract. Somatostatin inhibits the release of growth hormones. Next है PP cell, means या फिर F cells. PP cell या तो F cells. These cells secrete pancreatic polypeptide and inhibit the release of pancreatic juice. Next question है, maintain the function of testosterone. So answer लिखेंगे सेकेंड का, the group of hormones secreted by testis in androgens such as a testosterone. Function of androgens. It is also responsible for the appearance of secondary sexual characters such as facial and pubic hair, ठीक है, deepening of the voice, broadening of shoulders, male aggressiveness, etc. It involves in development of testes. Next, give symptoms of the disease caused by hyposecretion of ADH. तो इसका आंसर लिखेंगे, the condition causes excessive micturition of polyuria यानी polydyspia, increased thrust, etc.
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। First, Rakesh got hot on his head when he fell down from the motorbike, which inner membranes must have protected his brain. What other roles do they have to play? So answer लिखेंगे फर्स्ट का। When Rakesh fell down from his motorbike, the inner membranes called meninges protected his brain from injury. Second point लिखेंगे, these meninges for a protective covering around the brain and spinal cord, they act as shock absorber. Second है, give reason injury to medulla oblongata may prove fatal. सेकेंड का आंसर लिखेंगे, द मेड्यूला ऑब्लॉन्गटा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम. इट कंट्रोल्स इनवॉल्युंटरी विच फंक्शन लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, vasomotor activities and peristalsis. It also control non-vital reflex activities like coughing, sneezing, swallowing, vomiting, yawning, etc. Thus, damage of injury to medulla oblongata may disrupt these vital functions. Therefore, injury to medulla oblongata may be proved fatal. थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द sympathetic and parasympathetic nervous system on the basis of effect they have on, यानी कि पहला हार्ट बीट और दूसरा यूनरी ब्लड रेट दिया गया है. फर्स्टली हम लोग लिखेंगे हार्ट बीट का. हार्ट sympathetic nervous system accelerated the heartbeat, whereas the parasympathetic nervous system declares the heartbeat. Second है urinary bladder. Urinary bladder, sympathetic nervous system inhibits bladder contraction, whereas the parasympathetic nervous system stimulates bladder contraction. Fourth question है, while holding a tea cup, Mr. Kathori's hand rattle. Which disorder he may be suffering from and what is the reason for this? तो इसका आंसर लिखेंगे फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट. Mr. Kathori may be suffering from Graves' disease. It is caused due to increased level of thyroid hormone or hyperthyroidism. पांचवा क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर्स. आंसर लिखेंगे, फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी, मीन्स इरिटेबिलिटी भी होता है. Nerve fibers have polarized membranes, thus they have the ability to perceive stimulus and enter into a state of activity. Second है conductivity. It is the ability of nerve to transmit impulse along the whole length of the axon. Stimulus. It is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which brings about extension in a nerve, muscles, organism. A stimulus must have a minimum intensity called threshold stimulus in order to be effective. The subliminal stimulus will have no effect, while the subliminal strong stimulus will produce the same degree of impulse as the threshold stimulus. Next point है summation effect. A signal subliminal stimulus will have no effect, but when many such weak stimuli are given again and again, they may produce an impulse due to summation of effect. All are non-low. The nerve will either conduct the impulse along its entire length or will not conduct the impulse at all. This occurs in the case of subliminal weak stimulus. A refractory period. It is the time interval during which a nerve fails to respond to a second stimulus, even it is a strong. A synaptic delay. The impulse take about 0.3 to 0.5 millisecond to cross a synapse. It is required for the release of neurotransmitters from the axon terminal and extension in the dendron of the next neuron. Synaptic fatigue. The transmission of nerve impulse across the synapse stops temporarily due to the depletion of neurotransmitter. Velocity. The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerve. It is higher in homeotherms than polycytherms. The velocity of transmission is higher in voluntary fibers, 10 to 20 meter per second in a man, as compared to autonomic or involuntary nerves, 10 to 20 meter per second in
modulated nerve fibers, the velocity of transmission is higher and as an impulse has to jump from one node of Ranvier to the next. Next question है, how does the tongue detect the sensation of taste? So इसका आंसर लिखेंगे, the tongue detects the sensation of taste due to the gastroreceptors. Next question है seventh. Question है, state the site of production and function of secretin, gastrin and cytokinin. आंसर लिखेंगे, site of production, secretin, gastrin and cyclokinin are secreted in the gastroesophageal tract. Function है secretin का. It is responsible for the secretion of pancreatic juice for the pancreas and bile from the liver. Gastrin. It stimulates gastric gland to produce gastric juice. Second है clocytokinin. It stimulates the pancreas to release enzyme and also stimulates the gallbladder to release bile. Next question है आठवां. An adult patient suffers from the low heart rate, low metabolic rate and low body temperature. He also lacks alertness, intelligence and initiative. What can be this disease? What can be its cause and care? यानी cause बताना और care ही बताना है. ओके तो जैसा बोला गया वैसे ही लिखेंगे. आंसर लिखेंगे फर्स्टली, द पेशेंट मे बी सफरिंग फ्रॉम मायोक्सिडिमा. तो इसका कॉज्ड है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स यानी कि हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स. और इसका केयर क्या है, पेशेंट शुड टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिटेशन रेगुलरली एंड ईट फूड रिच इन आयोडीन यानी रिच इन आयोडीन होना चाहिए उसकी फूड में. ओके. नवा क्वेश्चन है, वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? एनालिज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. सो आंसर लिखेंगे, द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स यानी STH, सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन्स भी इसको बोलते हैं. ठीक है. द सेक्रेशन ऑफ GH इज हाई till puberty. Later its secretion become low. However, it is the constantly secreted throughout life for repair and replacement of the body tissue or cells. Function है इसका पहला, it stimulates the growth of the body and the development of all tissues. It's like accelerated protein synthesis and cell division. It stimulates the release of growth hormones. Second है thyroid stimulating hormones यानी कि TSH, इसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं. फंक्शन है इसका, इट स्टिमुलेट्स द थायरॉइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन थायरोक्साइन. थर्ड है एंड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. बाप रे इतना हार्ड नेम है. सो इसका फंक्शन है, इट स्टिमुलेट्स द एंड्रेनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन्स. इट मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ एंड्रेनल कॉर्टेक्स. उसके बाद है प्रोलैक्टिन. द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय PIF, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस. इसका फंक्शन है, एक्टिविटी इज द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसको मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रोलैक्टिन का है ना, मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं, ल्यूटोट्रोपिन भी बोलते हैं. तो ये नेम याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों की जगह. मतलब आप जब लिखते हो ना तो इन तीनों में से कोई एक भी लिखोगे ना नाम तो आपको हार्मोन में तो मिल जाएंगे. ठीक है. यानी ये तीनों का एक ही नाम है ना. तीनों का इसका लिखो, तीनों का मतलब एक ही, मतलब सीधा सा बात. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, स्टिमुलस मिल्क प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ मिल्क यानी कि लैक्टोजेनिक बाय द मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ. नेक्स्ट है gonadotropins, follicle stimulating hormones FSH. In males, it stimulates the development of seminiferous tubules. In females, it stimulates the growth of ovarian follicle. Luteinizing hormone यानी कि LH. LH induces the erupted follicles to develop into corpus luteum, and for the production of progesterone. FSH and LH are responsible for the stimulation of ovaries to produce estrogen. ICHS. In males, it stimulates the taste to produce the androgen called testosterone. Testosterone is responsible for the development of secondary sexual characters.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ द एड्रेनल मेड्यूला एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन एज अ क्लोजली इंटीग्रेटेड सिस्टम. So answer लिखेंगे. The adrenal medulla is the inner region of the adrenal gland. It is the modified sympathetic ganglion of the autonomic nervous system, ANS. The chromomaffin cells of adrenal medulla secrete hormones rather than releasing a neurotransmitter. These cells are innervated by sympathetic preganglionic neurons of the autonomous nervous system. The autonomous nervous extract direct control of the chromaffin cells. Thus, the hormones androline and noradrenaline can be released quickly into the blood. The impulses from the hypothalamus stimulate sympathetic preganglionic neurons, which in turn stimulates the chromaffin cells to secrete androline to noradrenaline. The fight or flight responsible is initiated by nerve impulses from the hypothalamus to the sympathetic nervous system, including the adrenal medulla. The response rapidly increases circulation, promotes ATP production, and decreases on non-essential activities. Thus, the adrenal medulla and sympathetic nervous system function in a closely integrated manner. Next question is question number 11. Name the secretion of अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. एक्सप्लेन देयर रोल. अगर आपने वीडियो एकदम ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन कहाँ किया था. क्वेश्चन नंबर जब हमारा 4 आया था उसका पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया था. तो उसके अंदर हमने चारों सेल्स के बारे में पढ़े थे, अल्फा बीटा एंड डेल्टा एंड पीपी. ठीक है, तो पीपी को पूरा ही आंसर आप लिख देना क्योंकि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और 11 का आंसर सेम ही है. ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो लो वीडियो को पॉज करो और लिखो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गॉटरिंग मेंटेन देयर कॉजेज. सो आंसर लिखेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. इट इज कॉज्ड बाय एन increase in the levels of thyroid hormones. This increases metabolic rate, sensitivity, sweating, flushing, rapid respiration, bulging of eyeballs, and affect the various physiological activities. Graves' disease. Hyperthyroidism in adults results in this disorder. It is characterized by protruding eyeballs, increased BMR, and weight loss. Increased BMR videos a range of effects like increased heartbeat, increased BP, higher body temperature, nervousness, irritability, and tremor of fingers. Simple quote. It is iodine deficiency. Gotter. Iodine is required for the synthesis of thyroid hormone, and if there is a deficiency of iodine in the diet, it causes an enlargement of the thyroid gland leading to simple quarter. This disease is common in hilly areas. Addition of iodine to tablet salts prevents this disease. The size of thyroid gland is increased, but the total output of thyroxine is decreased. Next question is question number 13. Name the ovarian hormones and give their functions. So answer लिखेंगे 13 का. Ovaries secrete the following hormones. Progesterone. It is secreted by the corpus luteum of the ovary after ovulation. It is essential for the thickening of the uterine endometrium, thus preparing the uterus for implantation of the fertilized ovum. It is responsible for the development of mammary glands during pregnancy. It inhibits uterine contraction during pregnancy. Estrogen. It is secreted by developing follicle estradiol. It is the main estrogen. It is responsible for the development of secondary sexual character in females. Relaxin. It is secreted by the corpus luteum of the ovary at the end of gestation period. It relaxes the cervix of the pregnant females and the ligaments of the pelvic girdle to ease out the birth process. Inhibin. It is secreted by the corpus luteum. Inhibin inhibits FSH and GnRH प्रोडक्शन. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. तो आपको दिया गया कंप्लीट द टेबल. लोकेशन आपको बस इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रही, जहाँ जहाँ आपको फिल करना है यानी ब्लैंक दिए गए वहाँ पर आपको फिल कर देना है. ठीक है, ओके. तो लोकेशन में आपको यहाँ पे फिल करना है
CNS, ठीक है। सेल टाइप में आपको यहाँ फिल करना है सैचुरेशन सेल्स। उसके बाद आपको CNS के आगे यहाँ पे जो खाली इसमें फिल करेंगे हम लोग गॉन्डेंट्रोसाइट्स, ठीक है, गॉन्डेंट्रोसाइट्स, ठीक है, गॉन्डेंट्रोसाइट्स, ठीक है, CNS के आगे करेंगे। और CNS के आगे यहाँ पर भी फिल करेंगे ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, गॉन्डेंट्रोसाइट्स। तो CNS के आगे यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग माइक्रोजिलिया ऑफ ब्रेन और ब्रेन माइक्रोफेजेस, ये हो गया। और ये CNS के आगे लिखेंगे इपेंड्रिमल सेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन में, यहाँ पे सैटेलाइट सेल के आगे यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे लिखेंगे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, टेबल कंप्लीट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो फर्स्टली ये डायग्राम आप समझ लो, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन along a nerve. The nerve impulses in a wave of bioelectrical or electrochemical disturbance passing along a neuron. Okay. Then आपका आंसर शीट ये रहा, okay? रोना मत ऐसे देख के। Neurons have a charged cellular membrane with a voltage that is different on the outer and inner side of the membrane. The plasma membrane separates the outer and inner solution of different chemical compounds but having approximately the same total number of ions. The external tissue fluid had both Na plus and K, but there is a predominance of Na and Cl while K plus predominant within the fiber on the intercellular fluid. The condition of a resting nerve is also called a polarized state. The polarized state of a neuron is established by maintaining an excess of Na on the outer side. On the inside, there is an excess of K plus along with the large negatively charged protein molecules and nucleic acid. Some amount of Na plus and K plus always leaks across the membrane. The Na plus and K plus pump actively maintain the ionic gradient across the resting membrane. The sodium pump or Na K allows the entry of K inside the membrane and exit of Na plus. The difference in distribution of Na plus and K plus on the two sides of the membrane produce a potential difference of 5 to 100 millivolts. Average is 70 millivolts. The potential difference seen in resting nerve is thus called resting potential 70 millivolts, and it is mainly due to differential permeability of the resting membrane, which is much more permeable of K than to Na. The result is slightly more K plus diffusing out than Na moving inside and causing a slightly differences in polarity. Also, ions like negatively charged protein and nucleic acid inside the cells make the overall charge negative on the inside and positive charge on the outside. The nerve membrane not only the leakage channels but also has many gated channels for Na plus K plus. These are also called voltage gated channels. These channels enable the neurons to charge its membrane potential to active potential in response to stimuli. The Na plus K plus gated channels are separated. The transport of both these ions is separately done. However, during resting potential, both these gates are closed and the membrane resting potential is maintained. The resting potential of the membrane is maintained unless the stimulus reach the neurons. Any change of disturbance to the membrane will cause Na plus to enter into the membrane and lower the potential difference lesser than 70 millivolts. Thus, the membrane become more permeable to Na plus. During resting potential, both gates are closed and resting potential is maintained. However, during depolarization of Na plus gates open and the K plus gates remain closed. This causes Na plus to rush into the anoxon and bring about depolarization. The extracellular fluid ECF becomes electronegative with respect to the inner membrane, which becomes electropositive. The value of action potential reaches plus 30 millivolts to 60 plus
millivolts. This triggers depolarization in the next part while itself start going to depolarization. ओके, गुस्सा मत करना, हाँ क्या, ठीक है, बट ये आंसर है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ईयर. और ये सारे पॉइंट जो है ह्यूमन ईयर के, ह्यूमन ईयर, फिर सिक्रेशनल व्यू ऑफ ह्यूमन आइज, एलिस ऑफ ह्यूमन ब्रेन और मल्टीपोलर न्यूरन. तो सबसे पहले हम ह्यूमन ईयर देखते हैं. मैं एक एक करके ना चारों की फोटोज दिखाऊंगी आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है. ओके, तो सबसे पहले ये रहा ह्यूमन ईयर का. नेक्स्ट है आपका ये वाला, बना लेना सबको. देन है आपका ये ह्यूमन ब्रेन, ठीक है. सबको डायग्राम को नेम भी दिया गया, ठीक है. आप भी इसी तरह क्लीन नीट सब बनाना, क्लीन नीट लेबल डायग्राम, ठीक है. देन है आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है. चारों के चारों फोटोज मैंने दिखा दी आपको, और आपको भी ऐसे ही डायग्राम्स विद नेमिंग के साथ आपको बनाने, ठीक है. अगर एग्जाम में आते तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द क्वेश्चन आफ्टर ऑब्जर्विंग द डायग्राम गिवन बिलो. देखो ये थर्ड का ना, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए. थर्ड के अंदर सब क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, तो हम एक एक करके देखते हैं. तो पहला ए है व्हाट डू द सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन. आंसर लिखेंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स. बी है व्हाट प्रोसेस इज यूज्ड टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स. आंसर लिखेंगे अ न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. सी है व्हाट शुड बी कंडीशन फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स टू बी कंडक्टेड. तो इसका आंसर है ये रहा. When a neuron receives an impulse, it passes to the next neuron. The impulse travels along the axon of the presynaptic neurons to the axial terminal. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लो, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट हमको दिया गया है चौथे का. विल द इम्पल्स बी कैरियड बाय पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इवन इफ वन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरन इज देयर. आंसर लिखेंगे a presynaptic neuron when receives an impulse relax a neurotransmitter into the synaptic cleft which is required to cross the gap between the axon terminal and the next neuron. For further transmission of impulse, a presynaptic neuron is required that initiates the release of neurotransmitter that facilitate the movement of impulses across synapses. Next question is E. Can you name the channel responsible for their transmissions? सो ये आपका आंसर है. स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे रिफ्लेक्स सेक्शन का दिखाया गया, तो ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है. चलिए आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए. तो एक्चुअली जो मैंने आंसर दिखाया था ना आपको, चौथे का जो बोला था कि ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो इसका है एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स पाथवे विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम, ठीक है. तो जो आंसर दिखा है वो इसमें लिखिएगा. और जो ई है कैन यू नेम द चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रांसमिशन, इसका आंसर ये लिखेंगे द लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स. ओके, हाँ ठीक है. गलत आंसर के लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी. हाँ क्या, मैं भी इंसान हूँ, गलती सबसे होती है, ठीक है. तो जो इसका आंसर पहले दिखा दिया था वो इसका है, ठीक है. और इस वाले का आंसर बोलेंगे इस वाला करके कितना कंफ्यूज कर रही है. तो जो ई है ना कैन नेम द चैनल वाला, तो इसका ही आंसर ये है, ठीक है. पांचवा है कृष्णा वॉज गोइंग टू स्कूल एंड ऑन द वे he saw a major bus accident. His heartbeat increased and his hands feel become cold. Name the part of the nervous system that had a role to play in this reaction. Okay, तो आंसर लिखेंगे the sympathetic nervous system controls body activities during fight, fright or flight situation. It activates the release of the hormones adrenaline and noradrenaline due to which the heartbeat increase, hand and feel to become cold. Next question है what will be the effect of thyroid gland atrophy on the human body. So ये आंसर है यहाँ से. thyroid gland atrophy causes hypothyroidism. For effect of thyroid gland atrophy on the human body, hyposecretion of thyroid hormone. It is caused by deficiency of thyroid hormone or removal of the thyroid gland. Cretinism. It is caused due to the deficiency of thyroid hormone in friends. A creatine has reduced BMR and low oxidation. They are short-stated, become the skeleton fails to grow. They are mentally retarded, show stunt growth and delayed puberty. They show dry skin, thick tongue, prolonged neural jaundice,
lethargy and constipation. This can be treated by the early administration of thyroid hormones. Myxedema, it is caused due to the deficiency of thyroid hormones in adults. It is thus characterized by the peculiar thickening and puffins of skin and subcutaneous tissue, particularly of the face and extremities. The patients lack alertness, intelligence. The patients suffer from the slow heart rate, low BP, low body temperature, and stunted sexual development. Simple quarter. It is the iodine deficiency quarter. Iodine is required for the synthesis of the thyroid hormone, and if there is a deficiency or iodine in the diet, it causes an enlargement of the thyroid gland, leading to simple quarter. This disease is common in hilly areas. Addition of iodine to table salt prevents this disease. The size of the thyroid gland is increased, but the total output of thyroxine is decreased. So next question है सातवां, write the names of hormones and the gland secreting them for the regulation of the following functions. ठीक है, तो ये मैं इसका पूरा टेबल बना हुआ दिखा देती हूँ आपको. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से लिख लेना. ठीक है, डन. सो स्क्रीन पर टेबल आपको नज़र आ रहा होगा फंक्शन, हार्मोन्स और ग्लैंड्स का. ठीक है, तो जिसमें बॉक्स में फिल करना उसको फिल कर दीजिए. ठीक है, फंक्शन में आ जाएगा ग्रोथ ऑफ द थायराइड एंड सेक्रेशन ऑफ थायरोक्साइन. फिर इसी तरह हेल्प्स इन रिलैक्सिंग प्यूबिक एंड लिगामेंट ऑफ फैसिलिटेट द इजी बर्थ ऑफ यंग गन्स. स्टिमुलस इंटरस्टिशियल ग्लैंड टू सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस. फिर हार्मोन्स में आ जाएगा टीएस हार्मोन, रिलैक्सिन. ग्लैंड्स में आ जाएगा पिट्यूटरी एंड ओवरीज. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स में लिख देंगे साइटोकैनिन. ठीक है, तो इस तरह आप पूरा टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए. सो सातवां कंप्लीट. आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस. सो आठवें का आंसर आपकी स्क्रीन पे. वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो. नेक्स्ट इन नौवा, व्हाट इज द एंड्रियोनो हाइपोफिसिस, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय इट. इसका भी स्क्रीनशॉट लो और आंसर लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन अकाउंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. सो आंसर लिखेंगे 10वें का एडिशंस डिसीज. इट इज़ अ कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी हार्मोन सिक्रेट एड्रेनल कॉर्टेक्स. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लो ब्लड शुगर, low Na+ and high K concentration in plasma, increased loss of Na and water in urine. It leads to weight loss, weakness, nausea, vomiting and diarrhea. Cushing's disease. It is caused due to hypersecretion of mineral locatids, hormone secreted by the adrenal cortex. It is lead to high blood sugar level, extraction of glucose in the urine, rise in Na level in the blood, high blood pressure, obesity and wasting of limb muscles. 11वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड प्रोटीनियस हार्मोन्स. सो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन के नीचे से. ठीक है, देन ये भी, ये सब, ये सारे आपको लिखने, और एक और आएगा ये भी. यहाँ तक आपको ये ले लेने हैं स्क्रीनशॉट. ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार डिस्क्राइब इन ब्रीफ एन अकाउंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड. पहले ही बोल दे रही, वीडियो को पॉज कर करके आंसर लिख लेना. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्रीनशॉट लो. देन आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर एंड होता है. मीन्स हमारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हमने सबको सॉल्व किया है. ठीक है, तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार. हाँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी जो मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैंने उसको सुधारा, आपको आंसर सारे बताए. ठीक है, तो इतना माफ़ तो कर ही दोगे ना मुझे. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि नेक्स्ट चैप्टर का आपको मिल जाए. ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर.